Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services, the video session on daily news and editorial analysis dated 10th of October. Through this video session, I'll make you understand some of the important news and editorial that would be relevant for the civil services examination. Even if you're preparing for any other state PCS or government examination, the entire session will be fruitful. So stay tuned till end of the session. And before I begin with the detailed analysis, just to give you the glimpses and the highlights of the news that I'll be discussing with you for today. For today, the first important news is all about the multimodal artificial intelligence. We'll see the evolving pattern of artificial intelligence. The second important news talks about ICMR study on the child undernutrition, or you can say the malnutrition. The third important news talks about the state assembly election that was recently announced by the Election Commission. We'll see the detailed constitutional provision and the part of the conduct of the election in India. Other than this, the second last important news is about the unemployment rate, जिसकी recent में release हुई है, PMFLA survey है, उसके through important findings आई है about the unemployment rate. And I'll conclude the session with an important editorial that talks about the mental health foundering the informal workers, something very important that will give you a deep insight for a given topic. So this is all in our discussion agenda. Let's get started with the detailed discussion. So the first important news is about the multimodal artificial intelligence. ये देखा गया है कि कुछ सालों में, in a couple of years, there have been a stream of AI system which has been brought out and which has been recently released. अगर कुछ AI important AI की बात करें, we have Chat GPT. Right, most of you must be aware about the Chat GPT which is in functional, और ऐसे कई chatbot हैं या AI bot हैं जो कि actually functional है, and they're providing a multimodal artificial intelligence globally. It is helping every country, be it the developing country or the developed countries. Now, the other thing that you need to know about the multimodal artificial intelligence, इसके definition को देखते हैं और समझते हैं. What is MAI? I'll better address this as a MAI, that is multimodal artificial intelligence. This refer to an integration of multiple form, जहाँ पे sensory output, data processing, they are component of MAI. First is the part of data processing. Data processing के साथ साथ जो sensory input है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है, राइट, दैट इनेबल टू अंडरस्टैंड इंटरैक्ट द वर्ल्ड इन अ मोर ह्यूमन लाइक वे. द पार्ट ऑफ एआई दैट इज देयर. अगर एआई इन जनरल की बात करें, एआई में काफ़ी हद तक एडवांसमेंट हुई है और इस एआई टेक्नोलॉजी ने द ह्यूमन इंटरफेस, द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दैट वी हैव सीन इज समथिंग विच इज ट्रेमेंडस एंड कमेंडेबल. Now, multimodal system की बात करें, this can engage AI in several ways. There are various vertical where it is working. Now, if you look at the vertical where it is working, there are different domains from healthcare, from tech industries to many other patterns, even in military or in defense, right? So there are a lot more other areas or domain where AI has been working. अगर defense forces की भी बात करें, India has just started with Indian Air Force and Navy, even for army, but बहुत ऐसे countries हैं like United States and China, they are already using the part of AI in their defense and paramilitary forces. Now, AI की बात करें, this can be chosen and likeness for the human mind, which is possibly for the natural course had to be the multimodal. Now, in terms of human intelligence, the AI has a tremendous potential. It has a good number of potentials, and even if you look at the part where the thing is evolving in India, अगर chatbots की बात करें या फिर जिस तरह से चीज़ें और evolve हुई है, specifically in India we have a medical industries which has been doing well in terms of AI, right? कई ऐसे robotic surgeries हैं, things are being done. So things is pretty sufficient enough to provide something to the humankind, to the mankind. Now, some advantages of the multimodal actually AI. क्या-क्या advantages है, क्या-क्या significance है? If it is asked in examination, आप कुछ important significance बता पाएंगे. First is it will improve the accuracy. अगर accuracy की बात करें, it is something it will help. तो accuracy में बहुत हद तक मदद है. उसके बाद enhanced user experiences, right? So whatever user, whomsoever is using, the user experience will be on a higher side, whether you are using it for a tech industries, for educational purposes, or for a medical purposes, it will have the part of the beneficiaries. Robustness against the noise, efficient resource utilization और better interpretability है जो AI के through की जा सकती है. So these are some of the major advantages of the AI that you can take a note of.
Now, a new race that has come up, अगर chat GPT की बात करें, this is something which is very common. So I'm taking the example of chat GPT. Chat GPT की जो पुरानी version थी, that was 3.0. Then they have upgraded to 3.5 and the current version is 4.0. So the thing has been evolving, and while mobile apps में भी बात करें, कई ऐसे important चीज़ों के synthesis हुई है जहाँ पे conversation based with a chatbot is also coming, and the company has said that through images, कई ऐसे images हैं, images और text को भी AI read करके उसको interpret करेगी. Now, apart from the AI that is being used by OpenAI, ChatGPT की अगर बात करें, इसकी parent company है OpenAI. So OpenAI is a parent company which has actually come up with the ChatGPT. तो GPT की parent company है. उसके साथ साथ Microsoft ने भी कुछ ऐसे important multimodal बात की है लाने की. Now, it's expected that Google will also release this multimodal large languages, which is known as Gemini. So this can be important for many other government examination that you are preparing for, that Gemini is the language for one. This is something which will belong to Google. कई ऐसे बैंक्स के एग्जाम है, वहां पे इस तरह के डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. Now, applications of multimodal artificial intelligence, कौन से ऐसे applications हैं जहाँ पे इनकी uses होगी. So the multimodal system will combine the computer vision. उसके अलावा it will have a natural languages processes, performance to the simple functions with automations image and the capitative generation, etc. So it's a wide array of areas where applications are there. It's not confined to any specific area. अगर बात करें मई 2023 की, मेटा which is a company which is owned by, Meta is a big giant which has vertical like Facebook and Instagram. तो उन्होंने अपने open source AI में भी बताया that they are using the image point, right, which will have text, visual text, audio, temperature and movement reading of an individual. So these app installation will give you the complete details about an individual. So the model can perform text to speech, which is already a feature in Google, in the Google search engine, you can find that. Then we have speech to text, speech to speech, then text to text. These translation will be available in Google in 100 languages. So you can see the ambit, जो इनके दायरे बड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लैंग्वेज 100 कर दी गई है. तो इसमें जो इंडिविजुअल हैं, जो एसक्यूएल जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट. Now, what are the other multimodal applications where it will actually help? So, कुछ applications की अगर बात करें where it will help. So, it will have a visual assistance. Most of you must be aware about the part of the Google Assistance which is used, Alexa. Alexa is pretty common nowadays. So, Alexa भी यूज़ की जाती है. उसके अलावा diagnostic और imagining में multimodal की जो applications हैं वो यूज़ होती है. This is basically with the part of the medical industries. Then we have chatbot and voicebot. कई ऐसे applications है. Just to give you an example of Zomato, if you're using Big Basket, तो Big Basket में भी इस तरह के आपको chatbots मिल जाएंगे. And for content creation we have ChatGPT. कई ऐसे institutions हैं या फिर ऐसे academic institutions हैं जो कि content creations के लिए भी AI की use करते हैं. So these are the different verticals and domain of the multimodal AI that is used across the globe. Now moving ahead with the other news, that is ICMR ने एक study करने की बात की where they will be looking for the solutions how the child undernutrition, basically undernutrition and malnutrition. I'm making a collaboration of this. So malnutrition and undernutrition can be studied. तो ICMR ने एक टीम फॉर्म किया है जो कि national level पे, they will be working at a national level and they will study how to explore the part of home taking food. अगर बात करें take home food which is there from the other in institutions also, right? So take home foods, this is THF, right? How this will impact the part of overall health for the children, इसकी study की जाएगी और एक analysis even the government will be sharing to make the policies. So what are the other details? अगर child growth की बात करें, this is a physiological human development. If you look at the part for the human development, this is a basic procedure. These are there. So normally a child grow and this occur between the formative stage and typically from infancy to adolescence. We are calculating this like from 1 year onwards. एक साल से ही बच्चों की डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का काफ़ी अहम रोल होता है. ऑल्दो दिस इज फ्रॉम बिफोर द चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, बट पोस्ट बर्थ 1 year is taken into an important stage, right? Now between 6 to 24 months, right? पहले कुछ 6 महीने पहले से, right? The window is taken into consideration और इस ट्रेजेक्ट्री में नोट की जाती है
कि उस चाइल्ड की क्या कोई किसी तरह की वेस्टिंग है उस एज ग्रुप में. द वेस्टिंग, देन अगेन वी विल सी द स्टनिंग विच इज देयर और नॉट, एंड देन अगेन अंडर न्यूट्रिशन. सो दीज थ्री आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक इंपॉर्टेंट डेटा भी रिलीज होती है और चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन को रेट की जाती है अकॉर्डिंग. Now, these data are also used in the National Family Health Survey, just to give you an idea. Now, there are proper nutritional and physical activities that is essentially required for the well-being, and crucial role are played for the overall development. So first and foremost, nutrition is very important for any age group. For child, it is equally more relevant. Physical activities and emotional well-being, these all together needs to have an amalgamation so that the child growth could take place in a better way. Now, अगर बात करें इंडिया में malnutrition problem की, as I've told you, there are 3 or 4 major problems. First is stunning, then we have underweight problem, then we have wasting, this is 3, and anemia. Anemia is most common in girl, right? So girls में ज़्यादा common है, girls और women are most prone to anemia. तो ये कुछ डेटाज हैं जो आप देख सकते हैं. This is for wasting 34.36, underweight में 31.7, wasting में 19.16, and anemia 55.74. So these are the data for the anemic or the malnutrition problem in the country. Other than this, क्या क्या ऐसे challenges हैं जो कि स्टडी की जाएगी ICMR के एक्सपर्ट के द्वारा. The ICMR group which has been formed will look into consideration with the suboptimal practices, including the inadequate quality and the quantity of food that is given to children. क्या quantity of food बच्चों को दी जा रही है उसके बारे में वो मॉनिटर करेंगे. Poor feeding practices that is there. They have listed out these problems. Actually, these are the problem also that is evident, right? Complementary feeding and initiating early to or early. So feeding, it should not be too early or either should not continue for too late. I mean, it should not start too late. These both poses problem to a child development. कुछ अदर डेटा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है. यू कैन टेक अ नोट और ईदर यू कैन टेक स्क्रीन शॉट फॉर द रिविजन. स्क्रीन शॉट से कई बार आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं. आई एडवाइज कि आप इसे लिख लें कॉपी में सो दैट यू कैन रिवाइज वॉट एवर नोट्स यू आर मेकिंग. सो चैलेंजेस में 69% डेथ अमंग द चिल्ड्रन इज देयर फॉर द अंडर 5. This is because of malnutrition. This is a data from UNICEF, and all this data that I'm telling you, you can easily use this in mains examination. These are the authentic data. उसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अकाउंट फॉर 1:3 पार्ट ऑफ द चाइल्ड वेस्टेड ग्लोबली. जो ग्लोबली डेटा है उसमें इंडिया के नंबर काफ़ी हाई है. इंडिया रैंक 102 इन द 117 countries in the global hunger index. This is for the 2019. You can check the latest one so that you can use accordingly. 59% of children and 53% of women in India are anemic. This is by CNS report 2019. Now, क्या suggestions देनी है ICMR को and what they have taken a note of? They have taken note that जो take home rations है, take home ration which is again given by the government of India and by the respective state government. So this will be taken into consideration और ये program aim करेगी to critically examine and improving the nutritional intake of the child. इसमें मैं आपके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा. जो fortified foods होते हैं, if you have seen the food label, you have come across fortified labeling which is there. This is handled by the FSI, right? तो FSI इसको handle करती है and they have come up with the details कि fortified foods भी actually में incorporate की जा सकती है. The suggestions are also the part where right food ensuring the infant, young child actually eating with the equal and critical. So everything are taken into suggestions और ये suggestions गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फर्दर दी जाएगी ताकि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में इसको incorporate कर सके. Now moving ahead with other news, that is Election Commission has announced elections for the other states. This is the state assembly which is scheduled. यहाँ पे आपको कुछ important चीज़ें जाननी है इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग के बारे में. Although the election related news is not that relevant, but seeing the trend of the UPSC prelims examination CSC की बात करें, कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं. We'll see the relevant one only. तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है इलेक्शन डेट्स फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन मध्य प्रदेश, Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana, and Mizoram. So these are the 5 states that will be undergoing with the state assembly election, electing their member of legislative assembly. Now बात करें कौन कौन से ऐसे states हैं जहाँ पे election होनी है. As I've told you, Rajasthan. These are the dates upon Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana, and Mizoram. Now among this, one thing to be noted, कौन से state में सबसे highest constituencies है. First is Madhya Pradesh.
Then we have Rajasthan, this is followed. Then we have Telangana with third. The fourth goes to Chhattisgarh, and fifth is Mizoram. So these are the state distribution. Sometime, I mean, it is a possibility that UPSC might ask you in the CSA prelims examination about the arranging of a state according to this seat allocation. जिस इस बार जो प्रेसिडेंट के वोट हैं उनकी क्या शेयर है हर एक स्टेट में, इस पे सवाल पूछे गए थे. इफ यू हैव नॉट चेक्ड द प्रीलिम्स क्वेश्चन 2023, डू चेक इट आउट. तो इस तरह के कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें, दिस इज स्पेसिफिकली रिगार्ड्स टू द इलेक्शन कमीशन. पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में ये सारी बातें बताई गई हैं, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट और उससे मैटर रिलेटेड बातें की गई है. आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329. नाउ दिस आर्टिकल इज अगेन इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट डिटेलिंग द आर्टिकल बिकॉज यू कैन रीड दिस फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक. तो आप वहाँ पे चेक कर ले हर एक आर्टिकल क्या चीज़ें को डिटेल करती है. बट इन सारे आर्टिकल्स में फंक्शंस, टेनोर, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो इलेक्शंस कमीशन के बारे में है वो एक्चुअली मेंशन की गई है. राइट. द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन 25th January 1950. Now, Model Code of Conduct आपके लिए जानना ज़रूरी है. We call it MCC. और सबसे पहली बात, Model Code of Conduct कब लगाई जाती है? When is the time that Model Code of Conduct come into force? कौन सी ऐसी टाइम होती है जब Model Code of Conduct फोर्स में आती है? जिस समय डेट की अनाउंसमेंट हो जाती है उसी टाइम से Model Code of Conduct लग जाती है. तो कल इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअल में अनाउंसमेंट की इलेक्शन डेट की, तो उन स्टेट्स में अब से इलेक्शन कमीशन के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो गए. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है बाय द इलेक्शन कमीशंस टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शंस. और ये हेल्प करती है इलेक्शन कमीशन को टू एक्चुअली कम विद देयर मैंडेट, जो कि आर्टिकल 324 में मेंशन है, that how they can supervise the election process, how they can control the part of parliamentary and state legislature, and how the transparency and impartiality can be there by the commission. तो ये सारी चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है. Now moving to the other news, periodic labor force survey for the urban unemployment, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है उसके डेटा को ध्यान में रखते हुए एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज की जाती है. दिस इज बाय the National Sample Survey Organization, right? So NSSO, which is released, this works under the Ministry of Program and Implementation, जिसे MOSPI भी कहते हैं. So they have released the data और इन्होंने अपने डेटा में बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरिया में, this is specifically for the urban area, it has reduced a bit. Now what are the details that is coming from the PLFS survey? अगर PLFS survey की बात करें, they have said that there is a declining trend, there is marginal decrease that we have seen. और current में ये rate 6.6 है from the comparison of March और January के बीच में जो 6.8 थी. तो current it is 6.8 from 6.6 from the earlier one that was 6.8, right? So this survey are published quarterly इसे publish किया जाता है, and this come up with the current data with the current weekly status. Now, low quality female jobs के बारे में बात की गई है. See, in India, when it comes to the part of gender, and in terms of gender, specifically the gender participations in employment और employment की अगर बात करें तो यहाँ पे भी रेशियो काफ़ी खराब है. So the unemployment data for the urban participation have seen that for April, June, the types of jobs were available were varying for specifically for the overall country situation. Even COVID-19 के बाद जिस तरह से upstick हुई है, still we are about to take the piece, right? The percentage of female employment in the casual labor has fallen by 6.8% from 7.3%. So earlier it was 7.3%, now it is 6.8. Meanwhile, the percentage of male with the salary job rose up to 50 basic point, and this is up to 47.8. तो ये कुछ basic data है specifically economical point of view से और आपके general studies के paper 3 में भी मदद करेंगे. Now some important facts that you should know through a diagram I'll tell you. So top 10 industries जहाँ पे women के participations काफ़ी high हैं. These are the IT sector where women contribute substantially. Then we have accounting and finance. Then we have education, IT and BPO, hospital, diagnostic, IT, telecom, उसके अलावे biotech, pharmaceutical and consulting and advisory services. ये कुछ ऐसे services हैं जहाँ women की active participations देखी गई.
नाउ कुछ की इंडिकेटर्स जो कि सर्वे में यूज की जाती है, दे क्लेम टू इम्प्रूव द की लेबर मार्केट इन अर्बन एरिया compared to those with the pre-pandemic, right? If you look at the part from 2018 till 19 and post-pandemic, like from 2020 onwards, the thing has become worse. उसके बाद जो survey आए, they have come up with 46.2 to 47.8 during the pre-pandemic level in this latest report. और unemployment rate change हुई है from 7.8 to 9.7%. और जो current है, this is for 2023, current is 6.6. तो दिस शुड बी नोन टू यू, किसी भी इंटरव्यू या इस तरह के डेटा में आपके लिए ये सारी चीज़ें रेलिवेंट होंगी. Now the other important facts that you can take a note of is about the details that is there. So India has one of the lowest female participations in the country. This can be used when you are writing essay. Essay में कई बार इस तरह के fodder point आप यूज़ कर पाएंगे. लोअर इनरोलमेंट रेट है, हायर ड्रॉप आउट्स भी देखी गई है, गर्ल्स परसुइंग हायर एजुकेशन इंस्टीड ऑफ वर्क, lack of enough flexibility in security of workplace आते हैं. So these are the other details what need to be done. Social security की ज़रूरत है, policies की ज़रूरत है, high enrollment ratio होनी चाहिए women की, and emphasis on skilling should also be there. Now moving ahead with the editorial for the day, that is the mental health and the foundering informal sector. Now mental health when it comes to India, we are not at good stage. तो mental health में इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छी नहीं है. There are several guidelines by WHO जो कि हमें अदर करने की ज़रूरत है, और इस गाइडलाइन के साथ जो SDG के गोल्स के टारगेट है, we need to also basically come up with the target by 2030. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर इसमें हाईलाइट की गई है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो. So what I'll be discussing through this editorial, first we'll see the India's experience, ILO की क्या रिपोर्ट है, सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, and we'll conclude this. So World Mental Health Day, which is celebrated on 10th of October every year. This has been focusing, and the day is focusing on mental health as a universal human right. Now mental health की अगर बात करें, it is at global level, it is an important component of a human right, right? It's a part of a human right. And the study by ILO revealed that 50% of the working adults are globally having a mental disorder. तो कुछ 15% लोग ऐसे हैं ग्लोबली जो कि मेंटल डिसऑर्डर से एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं. द पार्ट ऑफ वर्कर दैट आर ओवरलोडेड विद मेंटल हेल्थ डिस्कशन, सी आई मीन मेंटल इश्यूज, आई मीन द पार्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी हद तक डिस्टॉर्शंस हैं, लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द ऑफिस प्रेशर और एनी अदर प्रेशर दैट ही और शी इज हैंडलिंग. Now decent work positively has impacted the mental health. Unemployment की वजह से भी mental health में एक increase देखी गई है, discriminations अलग level पे भी हैं, और unsafe workplace has poses the risk for the mental health conditions. Now it was observed that low paid, insecure jobs and isolations of psychological risk has also compromised the mental health of the individual, and these are specifically in context of Indian studies, right? Now, the Indian experience की बात करें, informal workforce account for more than 90% of the working population. उसके साथ साथ जो informal workforce है that take regulatory protections, endure unsafe conditions, long hour, और इनको discriminations भी face करनी पड़ती है. ये Indian context में काफ़ी हद तक valid है. अगर आप case studies, general studies के paper 4 में handle करें तो आप ये सारे points भी वहाँ पे लिख पाएंगे. Gender parity account for 95% of the working women precarious, low paying jobs hai, lack of social support hai, and even patriarchal pressure are also there from both societal and family stress. United Nations Development Program की कुछ studies हैं, and they have found that unemployment and poor quality of unemployment or employment have consistently been detrimental for the mental health. एक तो unemployment, one is unemployment which is there, right? उसके अलावे employment के साथ साथ अगर poor employment है, poor employment में भी अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो भी बहुत हद तक मेंटल हेल्थ को डिस्टॉर्ट करती है. नाउ आईएलओ की क्या रिपोर्ट है मेंटल हेल्थ को लेकर के? आईएलओ हैज कम अप विद अ डिटेल दैट द यंग वर्कर्स इन इंडिया हैव इनसिक्योर, दे हैव द लो पेइंग जॉब्स ड्यू टू द डिस्परेशंस, एंड इवन सम आर लीविंग फॉर द वर्कफोर्स एंटायरली. अगर लोगों को पसंद नहीं है, दे आर एंटायरली लीविंग देयर जॉब एंड दे आर मेकिंग देयर माइंड पीस थ्रू अदर ऑप्शंस, राइट? तो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में ये रिवील की गई है दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन हायर इन एजुकेशनल लेवल, स्पेसिफिकली जो एजुकेटेड वुमेन्स है. इफ यू सी द लेवल ऑफ स्किल दैट इंडिविजुअल पोज, द यूथ पोज और जो जॉब है उसमें काफ़ी हद तक डिससेटिस्फैक्शन है. कोई
इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सपोज ही हैज डन हिज बीटेक, बट ही इज डूइंग अ जॉब ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, राइट, विच इज एक्चुअली नॉट द, विच शुड नॉट बी देयर इन इंडिया, राइट। तो स्किलिंग के हिसाब से जॉब्स नहीं है। दिस इज कंसर्निंग फॉर द लार्ज एज पॉपुलेशन इन इंडिया। काफ़ी ऐसे पॉपुलेशन है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और आईएलओ ने रिकमेंड किया है क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को, एंड इवन लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस अगर आप मीन्स में लिख रहे हैं तो मेक श्योर यू यूज दिस पॉइंट। नाउ सोशल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे मैक्सिमम पीपल आर देयर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो एक ज़रूरी है कि सोशल सिक्योरिटी दी जाए, चाहे वो माइग्रेंट्स हों, पीपल स्ट्रगलिंग विद मेंटल इंटरेस्ट एंड द डेट आर डेफिनेटली हैविंग देयर हेल्थ कॉस्ट, और वो ओवर द कॉस्ट बर्डन वो बियर नहीं कर पाते। पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद जिस तरह से इनसिक्योरिटी बढ़ी है, वी हैव सीन the part of the lifestyle being impacted, the part of the quality of life, the studies, the education, everything has been taken a backseat. Factors like food security, financial stability, these are something that has to be taken into consideration. Decrease funding देखी गई है। स्कीम्स लाइक मनरेगा में भी अगर बात करें, मनरेगा में रिडक्शंस की गई है ऑलमोस्ट 33% के आसपास, राइट। और ये अभी जो करंट एलोकेशन है वो 60,000 करोड़ रुपीज़ है फॉर द पार्ट ऑफ एलोकेशन विच इज़ देयर। अर्लियर इट वॉज 73,000 करोड़ रुपीज़, जो कि रिड्यूस कर दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है ताकि एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। और जो गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी कोड, वी कॉल इट CSS 2020 जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी, वो भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस नहीं कर पाई। नाउ कंक्लूड करें अगर पूरे एडिटोरियल को, तो आप ये लिख सकते हैं दैट इनफॉर्मल वर्कर्स फेस द इकोनॉमिक, फिजिकल एंड मेंटल वनरेबिलिटी। ये तीन फ्रंट पे जो वनरेबिलिटी है वो हैंडल कर रहे हैं। उसके साथ साथ कंट्री की जो मेंटल हेल्थ बजट है दैट इज बिलो 1% के बिलो है, जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। दिस विल ऑल्सो इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। तो सोशल सिक्योरिटी को भी प्रमोट करेगी। उसके साथ साथ मेंटल इफेक्टिवनेस, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स मस्ट ऑल्सो बी प्रायोरिटाइज। The proactive policies that is crucial to uphold the human health that should be also taken into consideration। और इसमें कुछ दो important SDG के गोल हैं। The first SDG goal that is 3 that called for good health, right? I have written here good health and well-being। ये करने की जरूरत है, इसे हमें अचीव करना है क्योंकि SDG के टारगेट्स में भी मेंशन है। और उसके साथ जो SDG के गोल है that call for decent work and economic growth, this should be the topmost priority for the government and for any stakeholders which is working। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर राइटिंग इन मेंस स्पेसिफिकली, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो SDG के जितने गोल्स हैं वो आप ज़रूर याद कर ले। 17 गोल हैं, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। अगर आप डेली भी रिवाइज करें, यू विल बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरी ऑफ देम। तो इसे याद करें और आगे प्रोसीड करते रहे अकॉर्डिंगली। जहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चन में SDG के गोल से रिलेटेड टॉपिक मिले उसे आप जरूर मेंशन करें। दिस इज हाउ यू कैन गेट एन एडिशनल मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। Now, moving ahead with the answers and discussion, जो कल के सवाल थे उसके करेक्ट ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। For first, the correct option is D। इसमें मैंने आपके साथ हाइब्रिड सीड के बारे में पूछा था, इसके वन ऑप्शंस करेक्ट हैं। They can choose to enhance the characteristics, और since all hybrid seeds have packet on the same parent, that means that can grow uniform। तो statement 3 भी करेक्ट है और statement 2 भी करेक्ट है, where they can fast grow with the heteronym seeds। So you can check your answer, आपने क्या करेक्ट मार्क किया। For second question also, fortunately the correct option is D। मैंने आपको नासा के बारे में पूछा था, नासा के कैल्पिसो मिशंस के बारे में। This mission has been there with the Pathfinder satellite. During 70-year lifespan, the mission has collected 10 billion lidar measurement, और इसने स्कॉलर स्टडीज में भी काफ़ी हद तक मदद की है। तो आप चेक कर लें कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपने एक्चुअल में करेक्ट मार्क किए। Now moving ahead with today's MCQ questions of the day। So the first question is about the Financial Stability Board। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। Financial Stability Board an internal organization to regulate the global trade। It consists of consortium of the central bank managing the worldwide monetary policy। It established G20 coordinate financial authorities। It decide with the legal binding on its member। तो इसके कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट रीच आउट टू द कमेंट सेक्शन और कमेंट में हमें A, B या फिर C और D जो भी आपको करेंट ऑप्शन लगते हैं वो बताएं। इसके आंसर्स मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा। Now the second question of the day is about the gravity batteries। Gravity batteries are the gravitational energies that result in the change due to high gravity known as potential energy। These batteries are working using the excess energy that aims to have a gravitational potential force, which means that can be converted through the electrical generator।
इस तरह के बेसिक सवाल CDS के एग्जाम्स में, CDS CAPF के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं एंड दिस इज प्रिटी रेलेवेंट फॉर CSE भी, राइट। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, admission and programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Prepare well, stay safe and put your best to get success. Thank you so much for watching.